And now that we have finished talking about the beautiful process of DNA recombinant technology, we go into a wonderful logic. How is a gene library constructed? We construct a library of all the genes and a beautiful process called as polymerase chain reaction. How do we take one gene and amplify it to produce billions of copies of that DNA? So we go into something called as PCR, polymerase chain reaction, and how it takes place. Let's analyze this. What is preparing and cloning a DNA library? A library is a collection of DNA fragments. Specifically, genes का library बनाते हैं from a particular species which is stored and propagated in a population of microorganisms. So we take genes, we store it into microorganisms, and that is called molecular cloning, और उसकी एक लाइब्रेरी बनाते हैं. There are two main types of DNA libraries, something called as genomic library and something called as cDNA library. So what are these? You have genomic library. It is a collection of all clones of DNA fragments that represent the complete genome of an organism. तो पूरा genome, if you remember, haploid number of chromosomes. So we have 2n, which is n paternal and n maternal found in a cell. So that is 2n. तो उसमें से कोई भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं. And this chromosome are in the form of two threads called as chromatin threads. तो ये है paternal chromatin thread, ये है maternal chromatin thread. तो दोनों में से एक chromatin thread निकालते हैं either paternal और maternal, और उस डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना के उसकी लाइब्रेरी बनाते हैं. सो कंप्लीट जीनोम की लाइब्रेरी बनाते हैं. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, the entire genome, the DNA, is isolated and cut into fragments using suitable restriction endonuclease. So this is, say, one DNA. Say we took maternal DNA. We use restriction endonuclease enzymes and cut the DNA into multiple fragments. और उसके बहुत सारे fragments बनाए जाते हैं. And each fragment is then put into cloning vectors, BAC or YC. If you remember, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर ये है बैक्टीरियल डीएनए और ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. उसके अंदर ये फॉरेन जीन डाल दिया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट स्पॉट. से फ्रैगमेंट नंबर 1, तो फर्स्ट फ्रैगमेंट नंबर 1 इज इंसर्टेड इन इट. सिमिलरली फ्रैगमेंट नंबर 2 इन अनदर बैक्टीरिया. तो दूसरे बैक्टीरिया के बीएसी के अंदर फ्रैगमेंट नंबर 2 डाल देते हैं. फ्रैगमेंट 1 डाल दिया, फ्रैगमेंट 2 डाल दिया. सिमिलरली अनदर बैक्टीरिया के अंदर वी पुट फ्रैगमेंट नंबर 3. तो ये है फ्रैगमेंट नंबर 3, फ्रैगमेंट नंबर 3 डाल दिया. एंड वी मेक द एंटायर डीएनए के फ्रैगमेंट्स, and each fragment is put into one bacteria using bacterial artificial chromosome, or if it is a yeast cell, then we use yeast artificial chromosome. तो ये BAC हो सकता है या YC हो सकता है.
and the recombinant vectors are put into suitable organism like bacteria or yeast. तो सबसे पहले डीएनए के पीसेस करके you put it into BAC, bacterial artificial chromosome, or yeast artificial chromosome, and these are then transferred into the host cell. And host cell can be bacteria or yeast. And yeast और बैक्टीरिया के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसके अंदर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होने लगेंगे एंड one fragment is transferred into each host cell and these transformed organisms are cultured और उनके क्लोन्स बनते हैं. तो जैसे ही आप एक फ्रैगमेंट लेते हो और उसको एक BAC और YAC में डाल देते हो, which is then put into a bacteria, then the bacteria ori and the BAC YAC ori will match and it will control copy number. तो उससे multiple copies बनेंगे and the entire fragment is copied. So we get copy of the fragment, copy of the fragment, copy of the fragment, and such a library of all the fragments. Complete genome का fragment जो बनाते हैं उसे genomic library कहते हैं. So the entire DNA is made into fragments. Each fragment is put into a BAC or a YAC, then introduced in the host cell bacteria or yeast, and the bacteria or yeast replicate, and that fragment is cloned multiple times, which is called genomic library. But sir, ये बहुत cumbersome process है. पूरा DNA तो sir, if you remember, 98% is junk. Only 2% is useful. तो सिर्फ 2% यूजफुल है और उसमें से ही प्रोटीन्स बनने वाले हैं. सो जेनोमिक लाइब्रेरी इज ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस. जो रियली इंडस्ट्रीज में काम आता है इज अ cDNA library. Now, what is a cDNA library? cDNA is complementary DNA and it is produced using mRNA by the process called reverse transcription. तो mRNA की मदद से complementary DNA बनाते हैं by a process called as reverse transcription, which is called Teminism, named after its discoverers Temin and Baltimore. तो टेमिन एंड बाल्टिमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एनालाइज किया था, उनके पीछे यह नाम है टेमिनिज्म. मोस्टली फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स a cDNA library is constructed, the logic being in eukaryotes there are coding genetic segments and non-coding segments, junk DNA, and coding are genes, non-coding are junks. The mRNA carries only the coded sequence which is translated into a protein. mRNA से कोडॉन होते हैं, उससे प्रोटीन बनता है. So what is done? mRNAs are isolated from a cell and using reverse transcriptase enzyme converted into cDNA. So ये है DNA और उसके अंदर ये है जीन और ये है जंक और ये है वापस जीन और ये है वापस जंक. तो जीन is allowed to undergo transcription to produce mRNA. जीन का ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA and mRNAs are allowed to undergo a process called as reverse transcription. So, एक एंजाइम भी होता है called reverse transcriptase, उससे बन जाता है वापस DNA. But this DNA is only the gene. इसमें से सिर्फ जीन बनता है
and that gene is then put into a plasmid or a BAC or a YAC, and that is introduced into a bacteria और उसकी multiple copies बनती है, तो this is say gene for insulin. तो उससे gene for insulin की multiple copies बनती है. This is say gene for keratin. तो उससे keratin की gene की multiple copies बनती है. And that library is made, a library having cDNA for every type of structural and functional protein is constructed by inserting it in a suitable vector and then clone. तो हर एक टाइप का स्ट्रक्चरल डीएनए और फंक्शनल प्रोटीन ऐसे डीएनए बनाते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं और उनको सूटेबल वेक्टर प्लाज्मिड, वाईएसी, बीएसी के अंदर डाल के होस्ट सेल में डाल के उसके क्लोन्स बनाए जाते हैं और होस्ट सेल सच एज ई कोलाई में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है. एंड दिस वे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स लाइक इंटरफेरॉन्स व्हिच आर एंटीवायरल प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन्स है एंटीवायरल प्रोटीन, और इंसुलिन for diabetes mellitus, blood clotting factor 8 or 9 for hemophilia are made using bacterial cultures having cDNA library. तो ये लाइब्रेरी एक्चुअली इंडस्ट्री में यूजफुल है बिकॉज यहां हम पूरे डीएनए का क्लोन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जीन्स का क्लोन करते हैं. जीन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए का बनता है जीन से बाय ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कन्वर्टेड इनटू अ सीडीएनए, उसको प्लाज्मिड या बीएसी या वाईएसी में डाल के उसको होस्ट सेल इकोलाई में डाल के उसके मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ यूजफुल जीन्स आर प्रोड्यूस्ड. That library is called as a cDNA library, complementary DNA library. Neat point of view say, how is a cDNA library made by? Made with the help of mRNA. By what mechanism, sir? Reverse transcription. And what is reverse transcription also called as? Teminism, named after the discoverers Temin and Baltimore. तो ये है cDNA library. And then we have gene amplification polymerase chain reaction, PCR. Gene amplification is obtaining millions of copies of a known DNA sequence that contains a gene. तो डीएनए के एक सीक्वेंस, एक जीन का मल्टीपल कॉपीज बनाया जाता है, and that is called gene amplification done artificially by polymerase chain reaction. PCR टेक्निक से, polymerase chain reaction से gene amplification किया जाता है. PCR is a in vitro technique, out of the cell technique, and it is a in vitro technique of gene amplification, a scientific method in which billions of copies of a particular DNA sequence is obtained in a very short time. तो बहुत short time में एक ही gene की billions of copies बनती है. It was first developed in 1983 by Kary Mullis, and in 1993 Mullis got the Nobel Prize in Chemistry for his work. What is the basic requirement for PCR technique? तो उसमें PCR के अंदर एक ऑटोमेटेड मशीन होता है और इस मशीन के अंदर एक स्लॉट होता है, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं द रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल उसके अंदर डाला जाता है. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? अ डीएनए सेगमेंट 100 to 35,000 base pair in length, which is to be amplified. तो एक डीएनए सेगमेंट से जीन फॉर इंसुलिन डाल देते हैं,
Gene for insulin, hypothetically, is the gene segment which is put. And then we put primers, forward and reverse primers, which are synthetic oligonucleotides of 17 to 30 nucleotides. They are complementary to the sequences present on the desired DNA segment. Primers are complementary to the sequences present on the desired DNA segment. Do we remember during DNA replication? सर ये है आपका replication fork and enzyme primase की मदद से बना था छोटे छोटे RNA molecules called as RNA primer molecules, and RNA primers read the DNA and attract the complementary nucleotides. तो आरएनए प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो ऐसे सिंथेटिक प्राइमर्स बनाते हैं which are about, and they are forward and reverse primers, and they are about 17 to 30 nucleotides each, which are complementary to the sequences present of the desired DNA segment. तो यह DNA segment जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, उसके ऊपर ये प्राइमर्स जाके फॉरवर्ड या रिवर्स ऐसे जाके चिपक जाएंगे. तो प्राइमर्स डाले जाते हैं. And 4 types of deoxyribonucleotides. We want to have a gene, और gene का basic constitution is deoxyribonucleotide, DNA के छोटे छोटे pieces, which is a purine, a deoxyribose sugar, and 3 phosphates. So purine, say adenine, deoxyribose sugar, and 3 phosphate, which is called DATP. That is called deoxyadenosine triphosphate. Deoxyadenosine triphosphate. Similarly, DGTP, deoxyguanosine triphosphate, और ये थाइमीन है तो डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, और साइटोसिन है तो डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. And these are the 4 types of deoxyribonucleotides put in. And then we put a thermostable DNA polymerase that can withstand temperature up to 94 degrees Celsius. अभी do you remember, ये आपका DNA है, ये है primers, ये है RNA primers, and you have complementary nucleotides attached by enzyme called as DNA polymerase. So DNA polymerase brings the nucleotides and goes in a very specific direction. If you remember, template is 3' to 5', so DNA polymerase will go from 5' to 3', and 5' to 3' on the other side, and produce Okazaki fragments. याद है all of you ये किया था हमने? If you don't remember, तो एक बार DNA replication वाला part देख लेना. तो ये है DNA, ये है primer molecules, और ये है DNA polymerase. Now, what is the challenge of DNA polymerase in PCR? So, DNA polymerase will have to function at a high temperature of 94 degrees Celsius. 94 degrees Celsius तक DNA polymerase को survive होना पड़ेगा. If you remember, you've done it in biomolecules, all enzymes undergo denaturation at 60 degrees Celsius. So 60 degrees पे enzyme denature हो जाएगा. So we have to use a thermostable DNA polymerase which can withstand the temperature of 94 degrees Celsius. For that, Taq polymerase.
isolated from a bacteria, Thermus aquaticus is used. Thermus aquaticus is a spring, hot spring level living thermacidophile. तो ये हॉट थर्मल स्प्रिंग में रहने वाला थर्मासिडोफाइल होता है एंड इट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स. 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, उसमें थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया ग्रो होता है. सो उसका एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, कैन विथस्टैंड 94 डिग्री सेल्सियस and is an excellent DNA polymerase. So अब PCR start करते हैं. PCR is thermal cycling, alternately heating and cooling the PCR sample. तो PCR sample को alternately heat और cool किया जाता है. The three essential steps of PCR: first, heat denaturation. This steps involves heating of DNA at 91 degrees Celsius. It breaks the hydrogen bonds to make it double stranded. तो ये है से guanine cytosine, adenine thymine, thymine adenine, cytosine guanine, guanine cytosine. If you put this DNA at around 91 degrees Celsius, at that high temperature, the hydrogen bonds will break and double-stranded DNA will become single-stranded DNA above and single-stranded DNA below. So DNA double-stranded का single-stranded हो जाएगा. That step is called heat denaturation. If there are more guanine cytosine pair, you need higher temperature. समझो GC ज्यादा है. If you have more of GC, तो याद है G और C के बीच में you have triplet, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए you need more than 91 degrees Celsius का टेम्परेचर, say 92-93 degrees temperature, if the DNA molecule has got more GC pairs. तो first step 91 degrees पे heat denaturation किया जाता है. Now from 91 degrees the temperature is cooled down to 55 degrees. तो thermal cycling, पहले 91 डिग्री, अब 55 डिग्री. उसमें होता है annealing. Annealing is the pairing of primers to the single stranded DNA molecule. So ये था आपका double stranded DNA, and at heat denaturation of 91 degrees it became single stranded. Single stranded हो गया, hydrogen bonds टूट गए. And now at 55 degrees there is annealing, which is pairing of primers to the single stranded DNA. तो ये primers जाके single stranded DNA को attach हो जाएंगे. Primers will go, there are forward primers and then there are reverse primers. तो ये reverse primers जाके reverse primers attach हो जाएंगे. ये forward primers, ये reverse primers, and they will get attached to the single stranded DNA. These primers, by the way, if you remember, are RNA molecules, and sticking of RNA primers to the single stranded DNA is called as annealing. That takes place at 55 degrees Celsius. And then from 55, we raise the temperature to 72 degrees Celsius. At that temperature, polymerization takes place, which is called extension. So polymerization or extension take place, primers के ऊपर आ जाएगा DNA polymerase called Taq polymerase, and Taq polymerase starts adding deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate,
deoxythymidine triphosphate, which are all called DNTPs. They are called as deoxyribonucleotides, DNTPs start getting added at a higher temperature of 72 degrees Celsius. तो पहले हमने हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए 91 डिग्रीज पे, दैट इज डीनेचुरेशन। 55 डिग्री पे प्राइमर्स आ गए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स, उसे अनीलिंग कहते हैं। And again at high temperature of 72 degrees, Taq polymerase starts supplying new nucleotides, and one mother DNA becomes two daughter DNAs which are genetically the same, which is called extension. तो ये जीन ऑफ इंसुलिन का हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा at 91 डिग्री सेल्सियस, कॉल्ड डीनेचुरेशन। जीन ऑफ इंसुलिन के दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए at 55 degrees, we did annealing, RNA primers attach हो गए, and at 72 degrees Celsius Taq polymerase और DNA polymerase ने new nucleotides attach किए, which is called extension, and we have two genes for insulin. तो genes of insulin के दो segments हो गए, and each step is one cycle. The cycle of PCR takes about 3 to 5 minutes. 3 से 5 मिनट में ये साइकिल खत्म हो जाता है. The process takes place for about 28 to 30 cycles, beyond which its reliability decreases. So 28 to 30 cycles. But can you imagine, एक साइकिल में 1 से 2 जीन्स बन गए, 2 साइकिल में 4 जीन्स बन गए, 3 साइकिल में 8 जीन्स बन गए, तो ऐसे 30 साइकिल्स करोगे तो कितने बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगे, and you will get billions of copies, and exponential amplification to a billion copies takes place in this beautiful automated machine called as polymerase chain reaction. ये टेक्निक आजकल हर जगह यूज कर रहे हैं, HIV डिटेक्शन के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए, ऑन्कोजीन्स, HIV वायरसेस, सब के अंदर पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पीसीआर, gene amplification beautifully done by this wonderful machine called as polymerase chain reaction. So, chalo, I hope you've understood this beautiful process. Please remember this.